Let's start, Vicky. I think people will join in sometime. Let's start. Okay, hello everyone. I think we are some 9 people right now, including me and Darshan. So, Darshan, if you can, people are muted, then you can unmute everyone, and one by one, if anyone has queries, we can take that up. But please keep it very short so that we can take up maximum number of queries. Hello, am I audible? Hello. कोई हाँ जी। एनीवन करके हम पार्टीशन है. Hi Darshan, hi Vicky bhai. Can you hear me? Hello. Yeah. Yes. So Okay, actually, I let's start. had I some don't queries. think we should wait Yeah. for any more people. The इसमें Okay. जब आना है तब they'll join. Okay. Uh, So the last week that's gone by, again, what we've done is we just stuck to selling calls because news environment was negative, and over the weekend, as you've seen, that Friday we did not carry any positions. Usually that does not happen. I try to carry at least calls if not puts, but this time I was having some sort of hint because Karachi index 20% girna or apna index just 1%. That shows that there was some sort of market had some sort of confidence that this will be a limited conflict. And if you just ignore Twitter and if you ignore Indian news channels, if you focus only on charts, and you would have understood that somewhere down the line some sort of settlement was coming. Even if it's not a settlement, but still I don't think market ko itna kuch issues are regarding this war. So we did not carry any position. Let's see what market does on Monday. Some are saying 25,000, some are saying 26,000. It's called stupidity. हम लोग इतने गिरे नहीं है तो I don't think we'll open some 25, 500 or 26,000. Maybe some 300, 400 points gap up. Let's see. And again, I'll be clear about it. Even if there is a gap up, I still look to sell calls after some time because ultimately market will start aligning to earnings rather than all these news now. But if there's any queries regarding what we did last week, you can definitely ask. Vicky bhai, I had one query as such. Okay. So the first query that I have, what is the margin that I would be requiring to like just start even for the adjustment? Like what is the can you hear me? Yes, we can hear you. Yeah. So typically, मेरे हिसाब से I think if someone has 10 to start with, that will be a good I mean margin. Because अगर मैं 10 भी पकड़ के चलूँ ना तो you will be able to have 4 lots of Nifty. और फिर क्या Okay. है पता है करना है ना तो करने में तो 2.5 से भी कर सकते हैं. But then you will be able to sell only one lot. फिर Right. That profit doesn't make दिखेगा sense. नहीं and then you will not you will try to sell something which is very nearby like 100 rupees options or 150 rupees options or in the money options then uh, वो फिर बिगड़ जाता है पूरा. So rather have a decent size of I think 10 lakhs is still a very good amount to start with. Okay, 10 lakhs plus I can add more 5 lakhs in case of some adjustments that I have to do, right? So You around. don't need to add because other option selling में if you go wrong, so I have already discussed that we can buy out of the money options and we can add positions. I think last week I don't remember which day we did exactly.
but I think we had this thing कि हम लोग ने option sell किया था. I think I don't remember the exact numbers because it's too many trades all the time. So we sold somewhere around I think 140 or 150, and then it went till I exactly don't remember what number, 300 plus गया था शायद. And we kept on adding, and वो एक साथ बाद में melt हो गया था. I remember the strike price because 81,000 Sensex calls थे वो, and Okay. 81,000 has been resistance since quite long. So I don't remember the option prices, but we kept on adding. I think we added some three times Okay. out of the money options buy करके. So that is the way you can average out your price. बाकी I don't think additional capital adds that easy. Like 10 means 10. You want to add more for your own benefit, then you can add. बाकी 10 is the minimum amount to start. 10 to So 15 you is the can have minimum, and the 15, expected 15, return would be 20, around 30, whatever you. Sorry. the expected return on a weekly basis, how much we can target on a My target has been 3%, but I think Darshan has already sent the calculation that last week it has been 9%. So yeah. even if you exclude option buying in that, and let's even assume the coming weeks may the volatility goes down, and you will have lesser premiums. That's why I always stick to 3% per month. This is nine. Last week what we did was 9% for the week. Okay, So वो understood. extraordinary थोड़ा है, and even if no one has asked this query, I would have myself put this out that you shouldn't be taking it as इसको extrapolate करने की जरूरत नहीं है कि हर week Yeah, 9% ही बनेगा. फिर तो हाँ, यार पूरी दुनिया ऑप्शन ही सेल करेगी. But right. we The should basic have a idea is reasonable कि, return. right, the consistency is important. So like even Yeah, if yeah, I consistency invest like and tax, so 3% is manageable. We can do that, like 3% or very one. much manageable. अगर 3% if someone किसी को तुम लोग में से किसी के पास अगर पोर्टफोलियो होगा ना, I can be honest, I don't have a portfolio. I mean, I Okay. want to stick to what I really like. So कुछ लोग को ऐसा होता है that you really like picking up stocks, and if you can see Darshan, he would suggest you large cash में कोई safe bets होगा. It will give you 10-15% return for the year, Right. or mid cap, small cap, whatever you want to do. कहीं से तुमको टिप आया है या कहीं का तुम्हारा ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस है, so you can stick to that, and उसके ऊपर ये margin collateral as a collateral you can keep, and you can try to make 3%. Yeah, the extra alpha that I can generate when the Yeah, market yeah, is extra not alpha you ready. can manage. 3% is 3%. I'm saying net of charges, जो भी तुम्हारा STT, brokerage वगैरह extra जो भी होता है, net of charges. You can put aside 1% for all those charges, and although Understood. 1% होता नहीं है, but still you can put aside 1% for that, and 3% you can. 3% is really A good amount. It is manageable on a week return. to week basis. It is a very good amount, I feel. So, Yeah, yeah, very much. so Three that was a percent doubt. for the month is 3% for the month is still 36% for Yeah, the year. So that is like a great number only. The consistency is important. exactly. So that is why I just wanted to understand. Thanks. Thanks for. And one more thing, I would really uh, I mean, want to put a point that option buying जितना ये week में हुआ है ना, it doesn't happen very frequently, because say Indian markets or anywhere in the world you go, option selling का ही market होता है. You will always see premiums going down. अभी ये volatility बीच में आया है, so क्या है, it's given a very nice opportunity. मैंने last week जो discuss किया था कि option prices ऐसे time पे easily melt नहीं होता है. Even if अगर suppose let's see let us say लास्ट अभी जो फ्राइडे को ट्रेड था, मैंने कॉल्स बाय किया था, इट वाज अ नेगेटिव मार्केट, बट ऑप्शन प्रीमियम्स मेल्ट ही नहीं होता है बिकॉज ऑफ दैट. be it whatever direction, call or put, or you will get, market will give you an opportunity कि तुमने जो भी ट्रेड लिया है, it will give you an opportunity to exit. So if you want to put aside those option buying wale trades, and you will still see it was a decent last week. I think if you put out option buying wala bhi, to we did do some 4-5% for the week last week. अच्छा week आ जाए, then nothing like it. बाद में you can manage in the coming weeks, and you can average it out. If anyone wants to discuss about strategy, I have already mentioned this. इसमें कोई, I don't think there is any strategy as such. It's purely discretionary. Sorry, I got a call, but yeah, I understood it. Thanks.
Okay, till the time anyone is not asking, I have another question, Sure, Vicky. sure. This is the what we are considering is a like a optimistic case. In case our view goes wrong, so what would be the like the drawdown that we can expect on our this thing? So is it value based or is it a view based this thing? Like if I'm See, investing, my personal, yeah, I understood. My personal, if you consider it as a drawdown, uh, I have had, I think I've had 5% intraday also okay, on an intraday basis. But that is something that is my appetite. So, um, I wanted to clarify that thing that whatever we do over here doesn't necessarily mean, see, the control is in your hands ultimately. right, If I'm selling 81,000 calls, I know my appetite, I know when to exit, I know how to reverse my position. But then if you are not comfortable with that, to see the 82,000 ka karo. That is still, I mean, 81,000 calls sell karna when Sensex was 80,600, so just 400 points away. right, That is not something I really do usually. But then this time I knew that there is a negative news around, so it's not easy to break that wall. वो understood, earnings की basis पे एक बार के लिए चले जाता, but even if you have had good earnings and then war खत्म हो जाए, तब maybe you can consider कि हाँ resistance टूटेगा वो. understood. This And time yeah, it was doing not. it on an intraday basis, so the decay would also be faster. I think so if we Yeah, are yeah. closer. Coming weeks, see if any, see, अगर थोड़ा settle down हो जाए ना ये सब news वगैरह and market finds some consolidation and then तो फिर you will see premium settling down. फिर है ना जो option buyers होंगे they will have a very very tough time. उनको frustration हो जाएगा. You will literally buy option and you will see the premium decaying. Understood. Actually, this thing happened last week also on one of the days when there was no particular news around. I mean, war का situation था obviously, but then there was no additional news coming in. So you must have seen that we bought some call options, and I this time I don't remember the strike price, but I remember कि हम लोग ने calls buy किए थे, and it was somewhere around 70 rupees, and then we kept on buying till 40. And ultimate uska average was 57, and at one point of time it did come to 57.5, and I had mentioned in the group कि वो 65 पे हम लोग स्क्वायर ऑफ कर देंगे, and वो 65 नहीं आया, and वो Right. 50 40 के अंदर वापस आ गया. At 37 my patience broke and I took a reverse position. I didn't take a reverse position, but I understood that my view is right. मार्केट ऊपर जाएगा, but problem was कि मैंने स्ट्राइक जो लेकर, हाँ, I now remember the strike, it was 24,400. Okay. It was 24,400 calls, and उस दिन 24,400 के नीचे ही एक्सपायरी आया था, and ultimately मेरे ख्याल से तो बहुत नीचे आ गया था बाद में towards the end of the day. But Hmm. what we did later on was we bought 23,000 calls, and I'm Right. really glad Yeah. we picked this up point because I wanted to discuss about this scenario also. So उसमें क्या हुआ था, हमने 400 calls buy किए ना, तो the moment your option becomes थोड़ा out of the money, तो वो डीके होना स्टार्ट हो जाता है. Even Hmm. if your view is right, वो 400 की तरफ जाता भी है तो भी तुम्हारा प्रीमियम वापस नहीं आता है. You have bought at 57, वो 65 मेरा नहीं आ रहा था. So I understood that I need to become in the money then. If someone doesn't know out of the money, in the money, let me know. I can explain that also फटाफट. So हम लोग ने जब भी 350 चल रहा था, हम लोग ने 300 के कॉल्स बाय किए. Now Right. 370 या 380 चल रहा था, तभी 300 के कॉल्स बाय किए. And then at 93, we bought at 105 or 110. In between that, we exited. That's how we made profit. So that is one more, वो at that point of time वो सोचना पड़ता है कि how do you really want to get out of this situation? And Understood. most likely they're not हो ही जाता है. But I can safely say that it is only because of this war scenario wherein the premiums are high and market volatility is high that I feel like buying options. वरना I don't generally get into option buying इतना. And if it's client accounts and the positions ही इतना safe होगा that you will not have intraday drawdowns इतना कि option buying करके उसको recover करना पड़े. Yeah. That is something I Obviously. do it for myself. We won't do it for the clients. Understood. क्योंकि 3% पर मंथ अगर स्टिक करना है ना तो फिर इतना ये सब करने की जरूरत ही नहीं है. जरूरत ही Don't नहीं है, right. get into What we can do, we extraordinary can things. decide our risk appetite according to your view as such. So that would be a much safer option, I guess, for me. Like, I think अगर see if someone wants to try with me next week, so suppose मैं कोई strike sell करता हूँ अभी on Monday, so you can reach me out personally and you can tell me that okay, maybe if you want to try paper trades or whatever, you can tell me that
तुमने ऐसे 81,000 calls sell किया है, so I am taking 82,000 calls. You have sold at 100, I'll sell at 40. So if someone can do that, anyone wants to do that, I'm okay with 5, 6, 7 people trying out at the same time. I will make notes for myself. आप जिस आपका नाम वगैरह बता देना मुझे, so I'll understand that लोगों का risk appetite कैसा है. Accordingly, then I'll decide that when I have to give out trades to you guys, तो तुम लोग को कैसे करना है. But you guys are free to choose your own this thing. I can help you with also this thing कि 3% करना है तो फिर what's right to stick to. Right. Because my goal is like I usually invest in equity for long term, and I feel the equity markets are again like for the next 2-3 months are not going to be that like lucrative. So to get the extra alpha out of it of my portfolio, I have Option buying is going to be really good for this entire year because one thing I can guarantee, we are not making new highs at least for next year also. ये साल भूल जाओ, next year भी new high नहीं आने वाला है. अभी maybe 26,000 you'll see at the end of 26 or whatever. This is my personal view. So I am of this view कि ये range में ही घूमता रहेगा, and this range में घूमना ना वो बहुत लोगों को frustrate करेगा. See, majority people lose money in this kind of right. scenario. Shorting में लोग पैसा कमाते हैं, long trending market में पैसा कमाते हैं, but when it's sideways market, the whole lot of majority lose money. So अगर if it's going to stick into a range, so फिर continue playing with that range. I have friends who are doing monthly options also, knowing that 25 या 25,500 is still a very good target, a good away, तो उसका भी प्रीमियम्स अच्छा खासा मिल जाता है उनको. Very safe and just against the portfolio, so extra return मिल जाता है उसमें से. Because my primary return is only through options, so I would Right. continue That is your doing style. thoda That I risky. totally agree. But okay, Yes. I'll try it out next week with you. I'll text you on the group, I think so, or personally. But I'll try it out. Okay, sure. Okay. Thank you. And जो भी कुछ करो, मतलब if anyone is trying out even paper trades or real trades, मुझे बताना तो I'll be happy to speak to you guys. Replies थोड़े जल्दी maybe ना आए मेरे during market hours, but end of the day I will definitely try to reply to all the messages. Yeah, actually, I was thinking to do it because of paper trades, में emotions, I cannot, I think so, we can use it. So I'll try it out with a 10 lakh capital. That is enough, I think so, good enough. Like 3-4 lots. Start with one lot, ऐसा है तो 2 lots से start करो. Right. Because 2 lots gives you one. See, whatever you do it in. I have this principle. Whatever you do it in multiples of 2. Because कभी भी, if you've seen, when I also take position, I had mentioned earlier कि I take 70% and then I add more 30%. Because optimum price पे कोई भी option बेच नहीं सकता है. You are selling a 50 rupees call, वो 50 तुम्हारे सामने 5 मिनट में 70 भी हो जाएगा. Right. But then कि ये खाली थोड़ा सा spike आया है, so you can add some more in 70 and then you move up your average to 55 or Right. 60. Basically staggered way में करना है अपने को, पूरा एक साथ नहीं डालना है capital. Exactly. Keep it. Right. What And अपना फायदा क्या है कि कभी भी move आता है, be it downside or upside. Options में one of the best things about options is option बहुत overreact करता है every understood. time. Hmm. Extremely overreaction आता है options में. One reason for that could be कि पूरा दुनिया options में पड़ा है, right? So Right. सबको अपना position काटना है, सबके algorithms होते हैं, वो हिल जाते हैं. सबको रिवर्स पोजीशन लेने होते हैं. whatever might be the reason, पैनिक मोड सेट हो जाता है. गामा इम्पैक्ट, if you are not aware about option Greeks, तो I would recommend थोड़ा ऊपर ऊपर से एक बार पढ़ लेना. और गामा इम्पैक्ट एक बार आ जाता है तो उसकी वजह से ऑप्शन प्राइसेस शूट अप. सो दिस इज द टाइम वो लोग मैडनेस आ जाता है ना, तभी कभी भी ऑप्शंस बेच देने का. बिकॉज वंस दैट मैडनेस सेटल्स डाउन, एंड आई वुड रियली वांट पीपल टू आल्सो लुक एट ऑप्शन प्राइसेस का चार्ट. निफ्टी का तुम लोग या सेंसेक्स का चार्ट देखते हो, उसके सामने सपोज तुमने 24,000 या 25,000 कॉल सेल किया है, तो उसका भी चार्ट देखो. यू विल Okay. सी स्पाइक्स इन बिटवीन. एंड वो बहुत ऐसे स्पाइक्स होते हैं कि यू विल सी वन वन टॉल ग्रीन कैंडल एंड उसके बाद में सक्सेसिव एक रेड कैंडल उतना ही बड़ा नीचे आ जाता है. So does the तो resistance work, the supply zones and all those things works in the option yes, prices as well? it works not 100%, not as smooth as Nifty spot or Nifty futures, but it does work.
बिकॉज सी कोई तो एल्गोरिदम बैठा है कहीं पे बेचने के लिए, अगर उसने बाय किया है ना तो Hmm. बेचने के लिए कहीं बैठा है, एंड इफ यू सी स्पाइक्स, तो वो भी एट टाइम्स देयर आर ब्रोकर्स हु जनरेट दी स्पाइक्स डिलिबरेटली सो दैट पीपल कैन गेट। अभी तुम्हारे सामने अगर कोई 100 रुपीज वाला ऑप्शन है, in 5 seconds it goes to 110, another 5 seconds it goes to 125, another 5 seconds it goes to 150, कभी तो you will get tempted कि नहीं यार ये मेरे सामने 100 से 150 हुआ, so let me just get into 150 और मैं 170 में निकल जाऊंगा। That is the point, you get stuck and वो 150 वाला 100 आता है, and then Understood. people blame markets कि नहीं यार ये ऐसे ही है वैसे ही है। तो दैट इज द परफेक्ट टाइम कि थोड़ा पैनिक या ऐसा कुछ आ जाए तो यू सेल ऑप्शंस। एंड अभी तो अच्छा है, अभी ये वॉर का पूरा सिनेरियो क्लियर हो गया है, सो यू विल हैव थोड़ा और बुलिश मार्केट्स और प्रीमियम्स मिलेंगे थोड़े ऑन द अपसाइड। मंडे वी कैन टेक पोजीशन, ट्यूसडे इट्स एक्सपायरी। Okay, for the BSE ये line. अज्यूम करके चलो कि सपोज सपोज ऑन अ गुड नोट, लेट्स से आई डोंट नो कितना ओपन होगा ऊपर, बट लेट्स से सेंसेक्स ओपन 1000 पॉइंट्स अबव कल, Hmm. एंड और 2500 या 3000 पॉइंट, आई मीन 2500 3000 पॉइंट इज स्टिल वेरी फार, बट और 2000 पॉइंट ऊपर के कोई ऑप्शंस होंगे ना, वो देख लो कि कितना हो रहा है। यू कैन टेक, आई मीन यू कैन सेल दोज ऑप्शंस। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ मच वी ओपन ऑन मंडे, बट जस्ट अ व्यू, दिस इज माय, आई मीन बेसिक एक मैंने रखा है कि मंडे इफ यू ओपन 1000 पॉइंट्स ऊपर, तो आई विल लुक एट द 2000 पॉइंट्स ऊपर वाले ऑप्शंस। Okay. If scenario is good, we can also sell put options. ऐसा कुछ नहीं है कि कॉल ही बेचना है, because now that things are clear, so we can take that risk with options का। Yeah, like we can take a intraday basis पे we can take a position. Right. You can also carry, that's okay, क्योंकि वॉर था तभी भी कितने गैप डाउन हुए हम लोग, ओपन 1% लोअर, इतना तो एपेटाइट होना चाहिए फिर। Vicky, I would request you to discuss those three sessions in particular. One was when we were short, like calls sell kiya tha, and the markets moved up. You kept on adding the shorts, and ultimately, uh, that day we made almost, I think, 1.7 या ऐसा कुछ figure था, which came from selling. That is of last week. This week we had a session when there was a M2M of minus 6 lakhs. From there, you managed to close in green, like more than a lakh. Then one session was yesterday when you, Friday, when war ka news tha, but you were buying calls. First, you sold Sensex calls, you made money in that overnight. Then you bought calls. I think you bought a strike in which you booked loss also once. नहीं, पुट भी राइट किया था 78,000 का, उसमें वो करेक्ट एग्जिट करेक्ट करके तूने कॉल लिया, और करेक्ट। कॉल एड अप करके यू केप्ट एडिंग 250 क्वांटिटी हो गई, लॉट्स 250 अगर लॉट। किसी ने वो पुट भी देखा होगा ना सेंसेक्स का, तो दैट आल्सो हाँ, melted at the end of the day. I I mean I don't know, I closed it prematurely, but अगर वो रखते तो that would have also added another correct. So I would want you to 1%. explain the three different. So basically, what I'm trying to bring it to notice of people who have joined or who will be listening to this later on is that there were three different sessions. One session when we've written calls, markets have moved up, calls have, मतलब वो 280 वाला, I think 480 या ऐसा कुछ हो गया था प्रीमियम at या some point. 400 प्लस हो गया था, yes yes। हाँ, and still managed to close that profitably. Number one is कि भाई, what was the conviction behind holding on to that position, and at what point you would have changed the position and booked loss and moved to maybe a call buy. सेकेंडली, मतलब ऑप्शन सेलिंग से जो वो दिन पे प्रॉफिट आया, तो उसके पीछे का क्या मतलब थॉट प्रोसेस था. Second is these 2 days when there was a steep M2M of almost 6.5 lakhs, but you were still वन बाय confident. वन जाते हैं, वन Yeah, बाय वन। one by one ये करते हैं, फर्स्ट one by one. सिनेरियो लेते हैं ना, फर्स्ट सिनेरियो आई वाज वेरी क्लियर दैट माय व्यू वाज नेगेटिव। पहले ना व्यू होना चाहिए, अगर मेरा व्यू नेगेटिव था, एंड व्यू वाज नेगेटिव नॉट जस्ट बिकॉज आई एम ऑलवेज इनटू सेलिंग कॉल्स या ऐसा कुछ नहीं है, व्यू नेगेटिव इसके लिए था कि वॉर सिचुएशन था, एंड विदाउट हैविंग एनी कोई पॉजिटिव न्यूज मार्केट्स वाज मूविंग अप, सो वो थोड़ा एब्सर्डिटी लगा। एंड सेकेंडली यू हैड अ क्लियर रेजिस्टेंस ऑफ 81,000 सेंसेक्स में,
and Sensex moving up like there is nothing has happened. I mean, ये वैसा ही वो Trump वाला जो situation था, even on that day, you must have seen that, on that day itself, market did not react much, and second day we went down by almost 2 or 3% almost. So I knew this was slightly, absurd move जो भी आया था वो calls का. My point was कि I don't want to buy calls because I knew at some point this will end. ये इतना तो नहीं चलने वाला है. But at what point it will end, I was not sure. That's why option buying में पड़े ही नहीं हम लोग. I was sure नीचे आने वाला है. My only job was कि मैं मेरा average इतना move करते रहो ऊपर, so that whenever it comes down, and it came down really rapidly, so that whenever it comes down, I can easily get out of it and make profit out of it. So उस दिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि कोई पैनिक हो गया था या फिर there was a need to buy options. Second scenario I think हुआ था wherein I think I already discussed that we changed अपना strike price because 400 calls was slightly far, and market was not ready to go above 420. मैंने already group पे mention किया था कि 400 420 के ऊपर थोड़ा sustain होगा तो we will have a very good move. I think we did go to 450 also at one point of time, but वो sustain नहीं हो रहा था. So I had understood कि ये हो तो नहीं रहा है sustain, but it will definitely give you one small up move. अभी प्रॉब्लम ये था कि ये स्मॉल अप मूव है ना, दैट वुड नॉट हैव बीन इनफ टू मूव अपना 400 का कॉल्स, बट इट वुड हैव बीन इनफ टू मूव 300 का कॉल्स बिकॉज वो इन द मनी है. इन द मनी कॉल मूव करना इज लाइक फ्यूचर्स मूव होना सीधा. अगर 10 पॉइंट निफ्टी हिला है तो इन द मनी कॉल भी 10 पॉइंट ही हिलेगा, बट अगर 10 पॉइंट निफ्टी हिला है तो आउट ऑफ द मनी रहेगा, दैट विल मूव ओनली 1 or 2 points. Because I wanted a rapid move, that's why I closed 400 calls and we switched to 300 calls. Thirdly, ये जो फ्राइडे वाला सिनेरियो था उसमें भी आई थिंक इट वाज प्रीटी मच क्लियर कि at one point market was not ready to go down beyond a certain this thing, and I think view was right, but somewhere it's a very good learning that view रखना, target mind में रखना and target execute करना, all three things are different and all three things have to be done together. हमने 350 का target रखा था but system में नहीं, mind में था वो target. Had it been in the system, we would have already exited and we would have closed for the day. We wouldn't have gone into 3 p.m. वाला move. तो 3 p.m. में वो 260 तक आया, उसके नीचे वो जा नहीं रहा था, so it was again understood कि वो वापस खींचे गए ऊपर एक बार. And 3 p.m. move में I have seen a lot of times that suppose if the market really wants to close on a good note, वो एक बार के लिए है ना एक रेड कैंडल बड़ा वाला देगा, because it does not want people to get into that move. वो 260 तक नीचे आया वो ऑप्शन, 300 वाला जो ऑप्शन था वो 260 तक नीचे इसके लिए आया बिकॉज उसको सबको निकालना था. वो निकाल के वापस 260 के ऊपर इट वेंट अप टिल 310. दैट इज स्टिल 60 पॉइंट्स का मूव सीधा. दैट इज गुड इनफ टू कवर अप एनी पोजीशन. 60 पॉइंट्स. एंड दिस इज ऑल, ये ऑप्शन बाइंग के सिनेरियोज है. सो वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, वी माइट नॉट बी डिस्कसिंग इट नेक्स्ट वीक क्योंकि वो शायद आएगा भी नहीं वैसा सिचुएशन. बट ऐसा आया तो वील ऑलवेज डिस्कस सच थिंग्स. अपना बेसिक ऑलवेज रिमेन्स ऑप्शन सेल ही करना बस. समझा. Why I don't suggest option buying in this group is because प्रॉब्लम ये है कि बाय द टाइम वो मैसेज पास ऑन होता है ना तब तक वो प्राइस मूवमेंट आ भी गया होगा एंड आई माइट हैव इवन बुक्ड आउट एंड थिंग्स वुड हैव सेटल्ड डाउन. तो ऑप्शन बाइंग इज नॉट अ फीजिबल थिंग. खुद से करो या किसी और से भी करवाओ. ऑप्शन सेलिंग इज द बेस्ट वे टू डू. Like I've already mentioned, you work on Tuesday and Thursday only. Tuesday end of the day you take Thursday का position and Thursday end of the day you take Tuesday का position. And in between, if you have gap ups or anything like that, you can add more positions. That's it. And focus on 3% return. हेलो विकी. Hello. विकी ऑडिबल. थोड़ा डिस्टरबेंस होगा, बाहर हो. Very much audible. अच्छा विकी लिसन नो. अभी जो भी 15 डेज है, मींस मैंने तो काम भी किया आपके साथ पहले, बट वट एवर वी हैव अंडरस्टूड सो फार,
ये सब तो ठीक है विकी, बट द मेन थिंग इज हाउ टू हैव दैट माइंडसेट। अभी आप तो चलो आपको पता है कि गेम कैसे घुमाना है, बट फॉर अस हु इज लाइक अ लेमैन, एंड it's not that we are new to it, but how to have that mindset when people see 4-5 lakh drawdown, आप तो दूसरी पोजीशन इमीडिएटली ले लेते हो। कितने लोगों Yeah, की वो, but मेरा drawdown इतना होता है because I take risky positions ना. What I'm saying is you don't need to do in such a way. but then we just You have to don't need follow to get it. पहले ही at the first place ऐसा situation आना ही नहीं चाहिए wherein you have to get into something like firefighting or anything. ऐसा कुछ करना ही ना पड़े. सेफ ऑप्शंस करेंगे अगर हम लोग तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ये सब. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट डोंट गो बाय व्हाट आई एम डूइंग. अंडरस्टैंड. आई एम नॉट सेइंग कि राज ये भाई, जो भी है उस ये पे मैं ना डिट्टो हम लोग वैसे ही करेंगे ट्रेड्स. व्हाट उस आई एम पे मैं सेइंग इज सॉरी. हाँ, सॉरी विकी टू इंटरप्ट. मैं सिर्फ आई वाज जस्ट हियरिंग राज भाई's query. I will be addressing it in the later part of the session when I will be discussing how we are going to associate and how we can start. Because see, 6 लाख का drawdown is on what quantity? अपन उतना quantity नहीं कर पाएंगे in a capital of 10 lakhs first of all. Secondly, I will not suggest, even Vicky won't suggest, to trade on a heavy quantity before gaining knowledge or practical first-hand experience of the prices. पहले अपने को दो दो लॉट एक एक लॉट से ही काम करना पड़ेगा, कितना भी आपके पास कैपिटल क्यों ना हो. अगर आपने ऑप्शन सेलिंग नहीं की है प्रीवियसली, एंड इवन इफ यू आर फॉलोइंग विकी बाई, स्टार्ट विथ स्मॉल, लाइक 2 lots और 3 lots. बिकॉज एक जो माइंडसेट है वो ओवरनाइट नहीं बिल्ड होता है. आई हैव सीन विकी डू दिस सिंस 2018 एंड ही हैज आल्सो बुक्ड लॉसेस. ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ही बुक किया है, बट अभी इतना कन्विक्शन आ गया है या इतना एक्सपीरियंस आ गया है कि लॉसेस बुक करके भी कैसे अपन बाहर निकल सकते हैं और कौन से दिन पे लॉसेस लेके बैठ जाना चाहिए, वो सब चीजें अभी इम्प्रूव हुई है. So it will with us also, clients who join us, in this particular product, will have to start small, start slowly, go gradually. मतलब स्केल अप करेंगे धीरे धीरे, अपने को डे वन से नहीं करना है. और दूसरा सजेशन है, इफ यू आर somebody who is not a very risky trader, don't go for the strike which Vicky is going, go for one strike away. मतलब अगर उन्होंने निफ्टी में 24,500 का कॉल बेचा है, अब 550 का बेचो. Your yield will go down slightly or maybe will be आई वुड सजेस्ट 30 I forty would percent suggest 600 का कॉल भी बेच सकते हो. Because if you want to make 3, imagine 9% in a week and 3% in a month. क्या मतलब डिफरेंस ही क्या है ना. 9% in a week, if you do it for 4 weeks, that is 36%. उतना तो साल में होता है इसका. So that is very wide difference. तो उतना मतलब मेरे स्ट्राइक को उतना करने का जरूरत नहीं है. But that is what I said कि either I suggest you the strike or else you reach out to me कि कौन सा strike, or else you take a call कि मेरे appetite के हिसाब से I think this strike is good enough. And obviously if अगर तुम लोग अभी suppose I am selling 24,400 चल रहा है and I sell 24,500 calls and you sell 2 strikes away from me, मतलब 24,600 calls. तो पहले मतलब the first one to fall in trouble will be me. So if I post a message on the group that I am changing my view and now I'm selling put options, then you guys still have a time. बिकॉज मेरा ऑप्शन मूव होगा और तुम लोग का ऑप्शन मूव होगा ना, तो इसमें डिफरेंस है. मे बी ऐसा हो कि तुम लोग का मूव हो भी नहीं एंड मुझे मूव करना, मुझे मेरा पोजीशन चेंज करना पड़े, तुम लोग को ना चेंज करना पड़े बिकॉज यू आर स्टिल स्लाइटली फार अवे मेरे से. अंडरस्टूड. एंड ट्रबल वाला टाइम कभी आता है जब यू हैव अ ट्रेंडिंग डे. विकी, Vicky, I यस. think we lost your voice. no, हेलो. he's I think he's waiting for someone to talk. अच्छा विकी, ये एक लास्ट वाला बताना ना, ये जो अभी लास्ट में हमने किया, like what you did, what was the logic behind that, wherein
in the last call of Sensex, you did 79 का put and then you did 80 का call, 1 buy 1 sold. उसमें ऐसा था कि अगर जाएगा तो दोनों ऊपर जाएगा या जाएगा तो दोनों नीचे जाएगा. उसके पीछे क्या लॉजिक था? Bullish logic ही था मेरा, because market, see, if you open 1% down on India Pakistan news, then I don't understand. मतलब this is a very, मेरे हिसाब से तो बहुत positive thing था, very positive thing to have, that you were opening just 1% lower. And anyway, see, market was not, I think somewhere we would have moved up. पूरा ग्लोबल मार्केट्स ऊपर जा रहा है, अपना ऊपर नहीं जा रहा था, बिकॉज अपना ये इंडिया पाकिस्तान न्यूज की वजह से अटका था. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी डिड नॉट मूव अप एंड वी डिड नॉट गो डाउन एट द सेम टाइम. वी वर देयर अराउंड दैट सेम रेंज की निफ्टी में 24,200 से 400, एंड सेंसेक्स में 80,000 से 81,000 1000 पॉइंट्स रेंज इन सेंसेक्स एंड 200-300 पॉइंट्स रेंज इन निफ्टी. सो अगर हम लोग नीचे नहीं गिर रहे थे, दैट इन इटसेल्फ वाज अ वेरी पॉजिटिव थिंग टू हैव. एंड जिस दिन न्यूज आ गया इंडिया पाकिस्तान का, दैट डे आल्सो आई थिंक somewhere I feel that this India Pakistan news वाला bottom was made on that day itself, जिस दिन वो gap down हुए थे हम लोग. And then we were not falling down further. अगर होता तो फिर maybe at some point we would have fallen more. And somewhere I saw puts का melting बहुत heavily हो रहा था. It was calls इतने ऊपर नहीं जा रहे थे, but puts तो बहुत जल्दी जल्दी melt हो रहे थे. So at one point I felt that if puts are melting right in front of me and calls हिल नहीं रहे, maybe calls बाद में जाके suppose react करेंगे, so why not sell put options and make money at the same time, right? And end of the day, calls did move up. अभी लोगों को mindset क्या हो गया था, लास्ट 3 दिन से ऐसे हो रहा था कि मार्केट वाज गोइंग अप ऊपर ऊपर, एंड एंड ऑफ द डे मार्केट ठोक देते थे और पुट ऑप्शंस के प्राइसेस सीधा जंप होता था आफ्टर 3 p.m. समवेयर इट हैड टू एंड, राइट? अगर इतना इजी तो नहीं हो जाता था मार्केट की रोज सब लोग पुट ऑप्शन 3 बजे बाय करके पैसा बना ले. सो माय व्यू वाज दैट दिस माइट बी अ रिवर्स थिंग दिस टाइम, एंड इट डिड हैपन. इट डिडंट हैपन जितना मुझे एक्सपेक्टेड था. मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट ऑप्शन टू गो टू 400 आल्सो. there's a reason why I did not exit at 350, because I was expecting 400 also at some point. बट उतना नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ. आई हैड कैपिटल टू एवरेज इट डाउन, एंड आई एवरेज इट डाउन टू द एक्सटेंट कि मैं एटलीस्ट निकल सकूं उसमें से. Okay, Vicky. ठीक है, I understood this. Last one, Vicky. So when you were confident that price is going to hit at 350, and but आपने वो order लगा के नहीं छोड़ दिया था, and somehow I think price also came to 350. उसके बाद 360 तक गया था वो. हाँ, लेकिन आपने उस टाइम पे बेचा नहीं. I don't know whether you missed to see the price or क्या हो गया No, उस I टाइम. did see the price, but I like I mentioned, I expected 400 also. हाँ. Then Vicky, why didn't we take the exit at that point? Because I was expecting 400. Greed. Okay. अच्छा. हेलो हेलो. हाँ जी सर. Yes, हेलो बोलो. सर, शक्य હોય તો हिंदी में थोड़ा लाभ આપો ને, अनुकूल હોય तो सर. तो गुजराती में हिंदी, आपसे okay. है. તો બહુ સારું हाँ, સર. गुजराती भी आवड़े. હા, ઓલો ઇંગ્લિશમાં બધું ઉપરથી જાય સાહેબ. બરાબર છે. બાઉન્ડ્રી हाँ, બારોબર no સ્ટીડિયમ problem. મારી હોય જાય. आवड़े गुजराती आवड़े. हिंदी में बोल दे बिमल. हाँ, हिंदी हिंदी. चलेगा. हेलो. मनसुख हाँ विकी आपको बोल. डाउट है कुछ? Mansukh bhai is a premium client. He is also invested heavily with Jerry sir. He wants to start in options. Uh, Gujarati would be more comfortable for him, but Hindi is good for all. या सो मनसुख भाई સર आपको कुछ डाउट હિન્દી है? में होगा ना तो समझ में पड़ेगा. ઓલો તો ઇંગ્લિશમાં તો શું બધું ઉપરથી જતું રહે સર. बराबर. ઓકે સર. और भी कुछ रहेगा? आई नो सब लोग को ऐसा ऑप्शन बाइंग का भी क्वेरीज है, बट ऑप्शन बाइंग का मतलब ये क्या है कि जितनी बार ऑप्शन बाइंग आएगा ना, उतनी बार नया क्वेरीज आएंगे, क्योंकि उसमें कुछ स्ट्रैटेजी जैसा है नहीं. एटलीस्ट ऑप्शन सेलिंग में अपना Vicky, स्ट्रैटेजी है कि in हाँ a इतना. nutshell, एक बार मनसुख भाई को थोड़ा एक्सप्लेन कर दे जो तूने अभी लास्ट में इंग्लिश में बोला ना, उनको शायद थोड़ा. अपना जो भी कैपिटल, हाँ, अपना जो भी कैपिटल है ना, उसको मतलब अपना इक्विटी का जो भी पोर्टफोलियो रहेगा, सपोज 25-30 लाख का रहेगा, उसको प्लेज करो, उसके ऊपर मार्जिन मिलेगा, वो मार्जिन यूज करो, उसमें से ऑप्शन सेल करो. उसमें अगर 3% महीने का छूटता है तो वो मेरे हिसाब से अच्छा रिटर्न है. इतना इतना टारगेट करके चलो.
शायद 3 से कम 2 भी आए तो वो भी बोनस ही है। उसको ऐसा मत गिनो कि वो मेरा 10 लाख कैपिटल यूज हो रहा है। उसको कोई इक्विटी में डाल दो या फिर कोई अच्छे इतने सेफ कोई शेयर्स रहेगा उसमें डाल दो, और फिर वो शेयर्स को प्लेस करके इसमें ऑप्शंस में करो। अभी तो सबके शेयर इतने गिर गए हैं, तो बाय डिफॉल्ट सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो चुके हैं, तो उनको प्लेज तो करके अच्छा भी ही है अपन ना, कर उल्टा सकते हैं। कि शेयर्स में रिटर्न ही आएगा ना, अपसाइड ही है मतलब अभी दोनों साइड से अपसाइड मतलब। और अपसाइड नहीं होगा तभी तक, ये साइडवेज रहेगा तभी तक ऑप्शंस में से पैसा आएगा। चलो ना, मैं एक काम करता हूँ एटलीस्ट थोड़े और मे बी एक और वीक है ना, मैं मेरा स्ट्राइक जो रहेगा ना उससे दूर का भी सपोज मैंने कोई स्ट्राइक का बेचा, मैंने 24,500 का बेचा ना, मैं 24,600 वो टाइम पे क्या चल रहा है ना वो भी मैं नोट करके ग्रुप में डाल दूंगा। तो अपने को क्या है वो भी समझ जाएगा कि अगर 24,500 पे इतना रिटर्न आया था तो 24,600 पे कितना आएगा, और पोजीशन रिवर्स करने पे क्या होता है। तो जिन लोग को भी ये चाहिए कि एक स्ट्राइक दूर में कितना रिटर्न बनेगा, उन लोग को भी थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा फिर। एग्जैक्टली वो बेटर रहेगा आई गेस। इवन मैं भी ट्राई हम्म करूँगा। सो मेरा भी वॉच रहेगा उस पे वैसा। चलेगा। मैं जस्ट वो स्ट्राइक और प्रीमियम उसका वो टाइम पे कितना है वो नोट करके रख लूंगा कि ये मैंने अभी 50 में बेचा है ये ऑप्शन, बट ये दूर वाला ऑप्शन है वो 25 चल रहा है, तो वो हिसाब से अपना रिटर्न एक बार कैलकुलेट करके देख लेंगे। ठीक है, और कोई क्वेरीज नहीं होगा तो वी कैन एंड। यस, और किसको क्वेरीज एनीवन हैज? I think we have no more queries, Vicky. So let's move to the second part of the session where we are going to announce the product. So for now हमने क्या सोचा है कि ये सिर्फ हम एंजल वन का जो हमारा प्लेटफॉर्म है जिसमें सेम ब्रोकरेज प्लान है विच इज ऑल्सो विद जेरी सर, विच इज द वैल्यू एड प्लान. So your intraday options futures will be 20 rupees per order brokerage. बट आपको खुद से ट्रेड करना है. ब्रोकरेज प्लान है 20 रुपीज पर ऑर्डर फॉर विकी भाई. स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस ट्रेडिंग, एसओटी हम बोल रहे हैं उसको, स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस ट्रेडिंग प्रोडक्ट विथ विकी भाई. इसमें प्रोडक्ट प्रोडक्ट जैसा कुछ है नहीं. It is a very simple way of working, that you being a part of DM Finance, Para Securities, having your demat account with us, are getting access to Vicky Bhai's पर्सनल ट्रेड्स जो वो खुद कर रहा है उसके कैपिटल पे. आपको उसका एक्सेस मिल रहा है एंड रियल टाइम बेसिस पे वो जो एक्शंस ले रहे हैं ही इज गोइंग टू अपडेट ऑल ऑफ यू गाइस इन दैट ग्रुप दैट आई हैव सोल्ड दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक, दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी. बेस्ड ऑन योर कैपिटल आप डिसीजन लो. अगर आपका और उनका व्यू अलाइन हो रहा है आप ट्रेड करो. अगर आपका और उनका व्यू अलाइन नहीं हो रहा है डोंट ट्रेड. इट्स अप टू यू. इट्स अ सेल्फ एग्जीक्यूशन मॉडल. अगर आपका और उनका व्यू अलाइन हो रहा है तो आप काम कर सकते हो, नहीं हो रहा है तो मत करो. अगर फॉलो कर रहे हो तो एंड टू एंड फॉलो करो. इफ यू आर समबडी हु इज हैविंग लिमिटेड नॉलेज, ज्यादा नॉलेज नहीं है ऑप्शंस का, तो फॉलो करो. एक एक दो दो लॉट से स्टार्ट करो, समझ में आएगा, एक्सपीरियंस आएगा कि क्या हो रहा है. बिकॉज ये ऐसी चीज है जो अपन 365 डेज कर सकते हैं और लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं. बिकॉज पोर्टफोलियो रहेगा हमेशा जो हम प्लेज करके रख सकते हैं, जिसका मार्जिन यूटिलाइज कर सकते हैं. वी कैन ट्रेड मे बी ऑन 50% ऑफ द कैपिटल इनिशियली. धीरे धीरे मतलब वंस थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा स्केल अप करके जितना मार्जिन है उसका 50% से स्टार्ट करो ट्रेड करना. जब कॉन्फिडेंस आ जाए, अभी के लिए टेस्टिंग के लिए दो दो लॉट एक एक लॉट से स्टार्ट करो. बिकॉज एवरीबडी हैज अ पोर्टफोलियो. दिस इधर से जो रिटर्न जनरेट होंगे वो आपके अल्फा को ऐड करेंगे. बिकॉज आपका जो कोर पोर्टफोलियो है वो जो रिटर्न देने वाला है दैट्स योर एक प्राइमरी रिटर्न. दिस इज लाइक अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम. जैसे हम बोलते हैं कि भाई जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उधर से अपन प्राइमरी इनकम कमा रहे हैं और उसके बाद स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां से हम सेकेंडरी रिटर्न कमा रहे हैं. दैट इज योर पैसिव इनकम. So this can be your
secondary income. It is not going to be a passive income because आपको रोज मार्केट के साथ व्यू बनानी पड़ेगी, व्यू के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा. यू विल हैव टू डिप्लॉय टाइम, बट आपको ये एडिशनल रिटर्न्स जनरेट करके दे सकता है. और नाउ हम इसको एज अ सेल्फ एग्जीक्यूशन प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं. I myself will be trading. Archit is going to trade himself for a few months, few expiries at least 6 to 8 weeks हम खुद ट्रेड करेंगे. हमको एक बार जब कॉन्फिडेंस आएगा, that is when we might announce. I am not sure if we will, but that is when we might announce an execution support product where we can use the PBS portfolios, pledge those stocks, use that margin to create that additional alpha through option selling. सेकेंडली, जिधर आपका व्यू अलाइन हो रहा है या आप फॉलो कर रहे हो और लेकिन आपका रिस्क एपेटाइट नहीं है, तो यू डोंट गो फॉर द सेम स्ट्राइक. आप एक स्ट्राइक दूर काम करो. समझो उन्होंने 80,800 का 80,500 का सेंसेक्स का कॉल बेचा है, आप 81,000 का बेचो. उसमें क्या होगा, आपके पास ज्यादा हेडरूम रहेगा. इन द इवेंट व्हेन एडजस्टमेंट करने की जरूरत आए तो आपको इतना पैनिक नहीं होगा, बीइंग अ न्यू कमर, बीइंग अ फ्रेशर. So that is a suggestion because that will only dilute your returns. जो ये 15% दिख रहा है अभी जो विक्की ने जनरेट किया, उसमें से आप ऑप्शंस बाइंग छोड़ दो. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, डोंट डू बाइंग. ठीक है, इनिशियली तो यू माइट लूज आउट ऑन 4-5%. Don't do aggressive selling. You will lose out on another 4-5%. But you can still manage 4% or 3%, if not in a week, maybe in a month. Target वैसा रखो कि क्योंकि इवन व्हेन विकी स्टार्टेड, आई रिमेंबर हिज गोल वाज 3 to 4% अ मंथ. ये जो एडिशनल जनरेट हुआ है, लाइक रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज बिकॉज ऑफ गेनिंग एक्सपीरियंस ऑफ प्राइस एक्शन ऑफ ऑप्शंस. तो धीरे धीरे अपना भी वैसा होगा. वी माइट स्टार्ट विद 2%, फिर कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ी मिस्टेक्स होंगी, लॉसेस होंगे, फिर रिकवरी होगी. एट सम पॉइंट इनफ trading experience, we might come to a point where we are able to do that 5-6% in a month. That is the most ideal and that is the best case scenario. उसके बाद जो returns generate हो रहे हैं उसमें risk comparatively higher है. तो अपन एक टारगेट लेके चलते हैं कि एडिशनल 4% या 3% अपने को जनरेट करना है. कुछ नई चीज सीखनी है. एक्सपर्ट जो खुद के कैपिटल पे ट्रेड कर रहा है, अच्छे खासे कैपिटल पे ट्रेड कर रहा है, वो अपना ट्रेड शेयर कर रहा है, बीइंग एसोसिएटेड विद अस एज अ ओल्ड फ्रेंड एंड अ क्लाइंट. ही इज डूइंग इट नॉट एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, नॉट एज एनी सब्सक्रिप्शन मॉडल. ब्रोकरेज इज नॉट एग्जॉर्बिटेंटली हाई. 20 रुपीज पर ऑर्डर जो जीरोदा चार्ज करता है वही चार्जेस है. आपको सिर्फ आपका डीमैट हमारे फ्रेंचाइजी में एंजल पे ओपन करना है. अगर आपका पोर्टफोलियो कहीं और है एंड यू आर ओपनिंग द अकाउंट, यू कैन ट्रांसफर दैट पोर्टफोलियो, प्लेज इट विद एंजल. एंजल इज वन ऑफ द एप्स वेयर यू विल गेट द मोस्ट, मतलब मार्जिन बेनिफिट्स हो गए या जो भी सेबी के फ्रेमवर्क में चीजें हैं, एमटीएफ फैसिलिटी हो गई, you might be able to trade on additional capital in equity segments. तो एंजल के प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिलेगा because it is a traditional broker, but it is offering you discounted brokerage in options. If you are somebody who wants to go for options trading with Vicky Bhai, so whoever is interested, I would request you to I will be sharing the link in the group. अब आपका डीमैट अकाउंट ओपन करो. वैल्यू एड प्लान है एंजल का, जिसमें आपका इंट्राडे ऑप्शंस और फ्यूचर्स का ब्रोकरेजेस फ्लैट 20 रुपीज एंड डिलीवरी ब्रोकरेज विल बी 0.3% in the value add plan. You can use this for your options, and we might with Vicky, whoever is having any issues, we can you can reach out to us. Me and Vicky will sit together, we'll review okay, what mistakes have you done based on your trades, and we'll guide you over the weekend. During the weekdays while this product is live up to 3:30, I would request कोई भी विकी को कॉल ना करे because he himself is trading. If you have a query, you can message him, he will revert back. By default उसके trading actions वो group पे डाल रहा है, but I don't want, because he is not interested in client level work, but he is doing it for us and to share the knowledge of options, which is something that he loves doing. So I would request people who join us, we will have weekend sessions at least once in 2 weeks
वहाँ पे क्वेरीज पूछ सकते हो, लाइव सेशन ड्यूरिंग द मार्केट आप मैसेज कर सकते हो. प्लीज कॉल मत करना बिकॉज दैट रियली ब्रेक्स द टेम्पो बिकॉज द काइंड ऑफ quantities with which he trades, I think M2M can become, is wild at times. So it will be very, like, very, matlab reasonable of me to expect from you guys that, we will not be disturbing him for his personal trades while taking knowledge from him and while, copying his trades, or maybe while taking the guidance from him, looking at his personal trades. Once again, I'm repeating, this is not an investment advisory product. This is not a profit sharing product. There is no fees for this product. आपको सिर्फ आपका डीमैट अकाउंट खोलना है and you will get access to Vicky Bhai's strategic options trading. Minimum capital is 10 lakhs. Because 10 lakhs से नीचे फिर वो प्रोडक्ट पे काम नहीं कर पाएंगे अपन. दो लॉट से भी करना है तो. Anything that you would like to add, Vicky, to your? बस फॉलो एंड टू एंड एंड मेरे मैसेजेस देखना बस, और कुछ नहीं. कुछ भी आधा आधा मत करना. मेरा मैसेज नहीं पढ़ा और खुद का और मेरा स्ट्रेटजी साथ में मिक्स किया, देन आई मीन फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी का भी नहीं है. एंड एनीवे किसी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसमें. इट्स योर, आई मीन प्रॉफिट लॉस सब आपका ही है. कोई प्रॉफिट शेयरिंग अपना नहीं है, कोई लॉस शेयरिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है. That's it, Darshan. I think you can close the call again. Chalega, done. So I'll post the link in the group and then we will reconnect sometime in the over the next weekend, maybe once we have some members who have joined. And looking forward to having all of you in the S.O.T program with Vicky Bhai. And I will make the new group with the people who have joined for that program. Meanwhile, in this group, day-to-day basis, EOD Vicky will be sharing his positions. कि आज का दिन कैसा हुआ. So those who have joined recently or need more exposure, want to see more of the performance, can see it on a day-to-day basis. Vicky will be sharing his end of the day messages like कि क्या हुआ आज के दिन में, screenshot basically. ठीक है Vicky, that works. Done. Chalo, great. So see you guys. Thank you for your time and have a great Sunday evening. Thank you. Thanks. Bye. Bye bye.